Dear students of class 11th, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये. तो ये हमें प्रूव करना है. प्रूव बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 2n plus 7 इज लेस देन n plus 3 स्क्वायर. तो हमें ये स्टेटमेंट है गिवन दिस स्टेटमेंट ये हमें प्रूव करना है. तो लेट द गिवन प्रिंसिपल स्टेटमेंट be Pn. That is, we write this statement as Pn, that is 2n plus 7 is less than n plus 3 square. तो यह हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो फर्स्ट स्टेप में ही हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे. That is P1, that is P1 will be 2 into 1 plus 7 less than, it is n is 1 plus 3 square, or we see here 2 into 1 it is 2, 2 plus 7 it is 9. It is 2 plus 7 less than, it is 1 plus 3 square, 1 plus 3 4, that is 7 plus 2 9, which is less than 4 square 16, or which is 9 is clearly less than 16. So clearly P n is true for n is equal to 1, that is P1 is true. P1 is true. That is P1 is true. Now assume that, तो दूसरा सेटअप जो हम करते हैं ये हम पहला सेटअप करते हैं, और दूसरे सेटअप में हम assume करते हैं कि it is true for n is equal to k. Assume that Pn is true for n is equal to k, where k is some positive integer, k is greater than 1, greater than or equal to 1, less than n. This is k. Now that is pk will be, the statement principal statement is, that is 2k plus 7 will be less than, that is k plus 3 square. तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर अगर हम ये जो है it is 1 और इसका नाम हम रखेंगे 2, तो हम क्या करेंगे, we shall prove this. Now we shall prove that Pn is true for n is equal to k plus 1, that is p k plus 1, that will be our principal statement will be now 2n, that is k plus 1 plus this 7 plus 7, ऐसे रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे इसको 2n plus, this is principal statement, 2n plus 7, 2n, n is k plus 1, n हमने क्या लिया k plus 1, तो यहाँ पर 2n means 2k plus 1 plus 7 is less than n plus 1, n is k plus 1, k, that is n plus 3, that is k plus 1 plus 3, k plus 1 plus 3 square, that is 2 k plus 1
plus 7 is less than, this is k plus 1 plus 3, that is k plus 4 square. Now यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर 2n plus 7 is less than n plus 3 square, ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट था हमारा। तो यहाँ पर हमने यहाँ 2k plus 7 is less than k plus 3 square, तो यहाँ पर 2k plus 1 is less than k plus 4 square. Now by using equation first, that is this equation, that is 2n plus 7 is less than n plus 3 square, and second is 2k plus 7 is less than k plus 3 square. ये हमने assume ही किया 1 and equation 2, so we can conclude that this is Pn is so we can say that Pn is true for n is equal to k plus 1, which implies that k plus 1 is true. Hence we can conclude that Pn is true for all n belongs to the positive integers, or n belongs to the set of positive integers, or n belongs to n. So इस तरह से ये एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4 अब हमने तकरीबन ख़त्म किया है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। बस आज इतना ही। खुदा हाफिज़।